friends, a big welcome to all of you. I hope all of you are doing really well. My name is Deepthi and let's start our chapter. And the name of the chapter is Nature Trail. You will know what is the importance of a nature trail or walk. What things must we keep in our mind while being in forest or at zoo? What are different wild animals and their features? Why do animals have different feet? What are different birds and their features? And what are insects and their feature? So इन सभी सवालों के जवाब आप जानेंगे चैप्टर के अंदर. Okay? But before that, let's tune up. Okay? So यहाँ पे एक zoo की picture आपको दी गई है. Okay? And now you have to answer all these questions. Okay? Nature trail. A nature walk is an outdoor activity focused on observing the natural world, whether in a wild forest, a city park with green spaces, or even a botanical garden. It is a form of outdoor education that allows for direct observation and learning about plants, animals, and natural processes. It is a call to pause and take note. We use our senses when we walk slowly and observe the world around us, such as the veins in a leaf, the creaking of a branch, the nest of a bird, or the scent of wild flowers. Whether you are on a zoo trip or on a safari, there are certain things you should keep in mind to ensure safety. देखिए, नेचर वॉक आपका क्या होता है? एक आउटडोर एक्टिविटी होती है ना, जो कि जिसमें आप नेचुरल वर्ल्ड को ऑब्जर्व करते हैं, चाहे आप फॉरेस्ट में हो या किसी सिटी पार्क में हो जिसमें विद ग्रीन स्पेसेस, या फिर किसी बोटानिकल गार्डन में. ओके, तो जब भी हम वॉक करते हैं स्लोली, हमारे चारों तरफ के वर्ल्ड को ऑब्जर्व करते हैं, हम अपनी सेंसेस का यूज़ करते हैं. ओके, तो जब भी आप जू ट्रिप पे हो या सफारी पे हो, तो आपको कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी है जिससे कि आप अपनी सेफ्टी को इंश्योर कर सकेंगे. ओके, safety while being in the forest. If you are on a forest safari, you should keep the following things in mind. अगर आप फॉरेस्ट में सफारी कर रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, दिमाग में रखनी है. ओके, always follow your guide's instructions as they know the area and potential dangers. Stay inside the safari vehicle unless your guide says it is safe to get out. Speak in soft voices and avoid shouting, whistling, or making sudden noises that could startle animals. Respect the wildlife's space. Remember, this is their home and you are just visiting. Do not leave behind any litter or personal items as they can harm the animals or pollute their habitats. Never offer food to animals even if they seem friendly and do not throw things at them to get their attention. देखिए, जब भी आप सफारी कर रहे हैं, हमेशा अपनी गाइड के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, क्योंकि उन एरिया के बारे में उनको जानकारी होती है, पोटेंशियल डेंजर के बारे में उनको जानकारी होती है. हमेशा सफारी व्हीकल के अंदर ही रहें जब तक कि आपका जो गाइड है वो आपको बाहर आने के लिए ना कहे. हमेशा सॉफ्ट वॉइस में वहाँ पे बात करें, शाउटिंग ना करें, विसल ना करें, कोई भी सडन नॉइस नहीं करना है, क्योंकि यू कैन स्टार्टल द एनिमल. वाइल्ड लाइफ के स्पेस को आपने रेस्पेक्ट करना है, क्योंकि ये वाइल्ड एनिमल्स का घर है, आपका नहीं. आप सिर्फ उनको विजिट कर रहे हैं. ओके, एंड इसके अलावा कोई भी वहाँ पे गंदगी नहीं करनी है, कोई पर्सनल आइटम वहाँ पे नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप उस हैबिटेट को पल्यूट करेंगे ऐसा करके. एनिमल्स को फूड कभी भी ऑफर ना करें, चाहे वो कितने ही फ्रेंडली आपको लगे, बट ऐसा आपने नहीं करना है. ओके, give animals plenty of space and be alert to signs of aggression, such as a tense posture or snarling. Pay attention to your environment and know where potential hazards are. Keep food inside tents and lodges to prevent attracting curious animals like monkeys. Animals को उनका स्पेस दें. ओके, जो भी साइंस हैं वहाँ पे लिखिए, साइंस ऑफ अग्रेशन होते हैं, तो यू शुड बी अलर्ट. ओके, जैसे कि टेंस पोस्चर है या स्नार्लिंग है, गुर्राने की कोई आवाज़ है. अपने इन्वायरमेंट की तरफ ध्यान दें और आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या यहाँ पे नुकसान हो सकते हैं, पोटेंशियल हज़ार्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए. फूड हमेशा टेंट के या लॉज के अंदर रखें, ताकि जैसे कुछ क्यूरियस एनिमल्स नहीं होते, लाइक जैसे कि मंकीज़ हैं, वो उसकी तरफ ना अट्रैक्ट हो. ओके,
Safety while being in a zoo. Do not feed animals or birds. Animals can become ill after they eat unsuitable food. जब आपको कुछ सेफ्टी जू में रखना, अगर आप जू विजिट करने, किसी भी एनिमल या बर्ड को कोई खाना ना दें. ओके. Remember that each animal has its own ration fed to it by the zoo workers. Do not feed the animals even if the animals seem hungry. हर जो एनिमल है वहाँ पे उनका अपना खाना होता है जो जू वर्कर्स उन्हें देते हैं. आपको लगता है कि कोई एनिमल भूखा है तब भी उसे कुछ नहीं देना है. ऑलराइट. Let the animals stay calm. Do not make loud noises, clap your hands, or attempt to scare them to get a reaction. Many animals are afraid of noise, timid, and shy even though they are captive. Never cross any fence or barrier in the zoo. Do not try to touch the animals. If an animal has teeth, it can bite. If an animal has claws, it can scratch. This is for the safety of both our visitors and our animals. Be careful. Obey all signage and directions from staff. Don't try to hug animals unless a keeper says it's okay, and don't try to take photos with the animals from anywhere other than behind the barriers and fences. Don't push to the front of a crowd to see what's going on. Wait your turn. Others will step back when they have seen what they want to. Leave no trace. Littering is not just unsightly, it is dangerous. Animals may ingest plastic or other waste, leading to serious health issues. Use the dustbins provided, and if you see litter, consider picking it up. Okay. लाउड नॉइजेस आपने नहीं करने हैं जब भी जू में जा रहे हैं, क्लैपिंग नहीं करनी है, क्योंकि इससे जो एनिमल्स हैं वो डर सकते हैं. ओके. क्योंकि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो शाय होते हैं, टिमिड होते हैं, वो जो नॉइज से डर जाते हैं. कभी भी कोई फेंस या बैरियर ना क्रॉस करें जू में, कोई सी भी एनिमल को टच ना करें. ओके. हमेशा जो भी साइनेज डायरेक्शंस दी रहती हैं तो उनको आपने ओबे करना है. किसी भी एनिमल्स को हग करने की कोशिश ना करें जब तक कि कीपर ये नहीं कहता दैट्स इट्स ओके यू कैन हग इट. ऑलराइट. भीड़ है, पुश ना करें, अपनी टर्न का इंतज़ार करें. ऑलराइट. कोई भी लीव नो ट्रेस. कोई भी अगर आप वहाँ पे लिटरिंग कर रहे हैं दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग. ओके. क्योंकि ऐसा हो सकता है क्योंकि एनिमल्स ने अगर ये जो वेस्ट है अगर उसको इंजेस्ट कर लिया, माउथ में ले लिया, खा लिया, तो कुछ सीरियस हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं. ओके. सो डस्टबिन आपको मिलता है वहाँ पे डस्टबिन में सारी चीज़ें डालें. और अगर आपको कुछ मिलता है, इफ़ यू सी द लिटर, जस्ट पिक इट अप एंड थ्रो इन द डस्टबिन. ऑलराइट. Learn by doing, do it yourself. Animals in forest. Wild animals are animals that live in their natural habitat, nature, and are not pets or farm animals. They find their own food and take care of themselves. Wild animals can be big like elephants or small like mice. They live in forests, mountains, oceans, and many other places. We can see them in a zoo or on a forest safari. They are crucial for maintaining a balanced ecosystem on Earth. Let's know about some wild animals. So wild animals, आपको मालूम है ना, जो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं और ये अपना खाना खुद से फाइंड करते हैं, अपनी देखभाल खुद से करते हैं. वाइल्ड एनिमल्स आपके बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं. ओके. आप इन्हें जू में या फॉरेस्ट सफारी में देख सकते हैं. ओके. तो चलिए कुछ वाइल्ड एनिमल्स के बारे में जानते हैं. Elephants are the world's largest land animals. They are known for their massive size, long trunks, and large ears, which are unique to African and Asian species. They are highly intelligent. They possess excellent memories. They are social creatures. They live in herds led by a matriarch. Elephants are herbivorous. They consume vast amount of vegetation daily. They use their dexterous trunks for a variety of tasks, including communication, drinking, and gathering food. Gaur is a mammal. It is one of the varieties of wild cattle. It is also called the Indian bison, native to Southeast and South Asia. It is the largest of all the wild cattle.
They love to live in an undisturbed area or undisturbed forest. Gaur is an herbivorous animal. They are observed to eat only plants and plant parts. लार्जेस्ट लैंड एनिमल आपको मालूम है ना कौन है? एलिफेंट है. इनका बहुत बड़ा साइज होता है और जब भी ये जाते हैं तो हमेशा ना ये हर्ड में जाते हैं, झुंड में जाते हैं. बहुत ही सोशल क्रीचर्स होते हैं. इनकी मेमोरी भी बहुत अच्छी होती है और ये हर्बीवोर्स होते हैं. इसी तरह से गौर एक मैमल है जिसे इंडियन बाइसन भी कहा जाता है. ये लार्जेस्ट वाइल्ड कैटल में सबसे बड़ा है ये और ये अनडिस्टर्ब्ड एरिया में रहना पसंद करता है. ये भी हर्बीवोरस एनिमल है. प्लांट या प्लांट के पार्ट से खाना पसंद करते हैं. Know it too. The gaur is the mascot of 54th Infantry Division of the Indian Army. It is the state animal of Goa and Bihar. Okay. ये जो आपका गौर है ना, ये गोवा एंड बिहार का स्टेट एनिमल है और इसके अलावा ये 54th जो इन्फेंट्री डिवीजन था इंडियन आर्मी का, उसका ये मैस्कट भी था. The Indian giant squirrel, also called the Malabar giant squirrel, is a large, colorful, tree-dwelling squirrel found in India. It is known for its unique color patterns, long tail, and ability to make big jumps between trees. These active plant-eating squirrels are important for their forest homes because they help spread seeds. मालाबार जाइंट स्क्विरल बहुत ही बड़ी है, स्क्विरल होती है, कलरफुल होती है और आपको पता है स्क्विरल पेड़ों पे रहती है. ओके ये अपनी यूनिक कलर पैटर्न के लिए जानी जाती है, लंबी टेल के लिए जानी जाती है. ऑलराइट और ये भी हर्बीवोरस होते हैं और इनका फॉरेस्ट में होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीड के डिस्पर्सल में सीड हेल्प करते हैं. ओके Spectacled monkeys, also called dusky leaf monkeys, are cute social primates from Southeast Asia. They are famous for their spectacles, white rings around their eyes. Born bright orange, they eat leaves, fruit and flowers, using their long tails to balance as they leap through trees in their forest homes. They live in family groups where females are strong nurturers and males are protectors, but they face danger from habitat loss. Spectacled monkeys, जिसका नाम है डस्की लीफ मंकी. इसको स्पेक्टिकल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके आइज के राउंड ऐसे वाइट से सर्कल होते हैं जो कि स्पेक्ट्स की तरह लगते हैं, इसीलिए इसको स्पेक्टिकल्ड मंकी भी कहा जाता है. ब्राइट ऑरेंज इसका कलर होता है. ये लीव्स, फ्रूट्स और फ्लावर्स खाते हैं. ओके और ये फैमिली ग्रुप्स में रहते हैं जहाँ पे फीमेल जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग नर्चरर्स होती हैं और जो मेल होते हैं वो प्रोटेक्टर्स होते हैं. ओके Learn by doing. The spectacled monkey is the state animal of Tripura. Okay, Tripura का ये state animal है ना. Write the name of your. अब आपको खुद के state animal, state bird और state plant का नाम बताना है. All right. On the basis of living places, wild animals are categorized into three groups. Number 1, terrestrial animals. 2, aquatic animals. 3, amphibians. Terrestrial animals. Animals that live on land are called terrestrial animals. These animals live on land safely in their natural environment. Lion, tiger, elephant and giraffe are some examples of terrestrial animals. So living places के बेस पे वाइल्ड एनिमल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें नंबर 1 है टेरेस्ट्रियल एनिमल, यानी वो एनिमल जो लैंड पे रहते हैं जैसे कि लायन, टाइगर, एलिफेंट. ओके Next group is aquatic animals. Animals that live in water are called aquatic animals. Most of these animals have a streamlined body and all of them breathe in oxygen present in the water. Fish, seahorse, octopus and whale are some examples of aquatic animals. Aquatic animals यानी वो animals जो पानी में रहते हैं और आपको पानी में मालूम है पानी में आपकी ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व होती है और ये उससे ब्रीथ करते हैं. ऑलराइट Animals which live in water have special features to help them survive. Fish have fins to swim. The gharial, a type of crocodile, has a long, narrow and pointed snout to catch fish. Turtles have strong shells to keep them safe and webbed feet to help them swim easily. Frogs can live both on land and in water. अच्छा एनिमल्स जो पानी में रहते हैं ना उनके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं इसीलिए वो सर्वाइव कर पाते हैं पानी में. जैसे कि फिश की फिन्स होते हैं,
स्विम करने के लिए। घड़ियाल जो आपका टाइप ऑफ क्रोकोडाइल ही है, इसका पॉइंटेड स्नाउट होता है, लॉन्ग पॉइंटेड, जिससे कि फिश को कैच कर सकते हैं। टर्टल के बहुत स्ट्रॉन्ग शेल्स होते हैं जिससे कि वो खुद को सेफ रखते हैं, और उनके वेब्ड फीट भी होते हैं जिससे वो स्विम कर पाते हैं। इसी तरह से जो फ्रॉग है वो आपके लैंड एंड वाटर दोनों में रहता है। Amphibians. Animals that can live both on land and in water are called amphibians. These animals lay their eggs in water, in sand, or on land. Frogs, alligators, tortoise, crocodiles are some examples of amphibians. Amphibians वो एनिमल्स होते हैं जो लैंड में भी रह सकते हैं और वाटर में भी रहते हैं, जैसे कि आपका फ्रॉग है, tortoise, alligator. Okay? लर्न बाय डूइंग गेस हु एम आई, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, नंबर 1, आई एम द टॉलेस्ट एनिमल, ये तो आपको पता होगा। ओके, तो बहुत ही सिंपल से आपको एग्जांपल आपको गेस करना है एक्चुअल में। ओके, सो डू इट योरसेल्फ। Animal feet. Have you ever wondered why animals have different kinds of feet? Animals have adapted specialized feet to help them survive in their habitat. Animal feet differ based on their function. These include specialized types like paws, example cats and dogs, for grasping and walking, hooves, example horses, deer, for running, talons, example eagles, for gripping prey, webbed feet, example ducks and otters, for swimming and grasping feet, example opossums and primates, with opposable digits for climbing trees. Their structure reflects the environment and lifestyle, whether it is digging, poaching or locomotion. आपने एनिमल्स को कभी ऑब्जर्व किया है? हर किसी के जो फीट होते हैं ना वो डिफरेंट काइंड ऑफ फीट होते हैं। ओके, एक्चुअली इनके स्पेशलाइज्ड ये फीट है जिससे कि वो अपने हैबिटेट में वो सर्वाइव कर सकते हैं। एनिमल जो है, एनिमल फीट वो डिफर करते हैं वो उनके फंक्शन पे। देखिए, जैसे कि पॉज होते हैं कुछ एनिमल्स के, कुछ ग्रास्पिंग के लिए या वॉकिंग के लिए, हूव्स होते हैं रनिंग के लिए, टैलून्स होते हैं अपने प्रे को ग्रिप करने के लिए। ओके, सो हर एनिमल के जो फीट हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। वो डिपेंड करता है व्हाट इज देयर हैबिटेट एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ देयर फीट। ऑलराइट, birds. Birds are lovely creatures that can fly high in the sky. They have 2 wings, 2 legs and a beak. There are birds of different body shapes, sizes and colors. They lay eggs and their babies are called chicks. Birds eat different kinds of foods like insects, seeds, fruits and nectar. Many birds migrate long distances when the seasons change. Some birds can talk or sing beautifully. Some birds like eagles and vultures are expert gliders and they can fly and remain great heights for a long time. But some birds like kiwi, emu, penguin and ostrich cannot fly because their bodies are too heavy to help them fly. बर्ड्स देखिए बहुत ही लवली क्रीचर है, इनको उड़ते देखना बड़ा अच्छा लगता है। उनको देख के तो ऐसा लगता है कि काश हमारे भी विंग्स होते और हम भी उड़ पाते इनके जैसे। ओके, इनके होते हैं बच्चों 2 विंग्स, 2 legs and a beak. इनका बॉडी शेप, साइज, कलर हर बर्ड का अलग अलग होता है। ओके, ये एग्स देते हैं, उनमें से उनके बेबीज हैच आउट होते हैं। बर्ड्स डिफरेंट टाइप ऑफ फूड खाते हैं, जैसे कि इंसेक्ट खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं। ओके, कुछ बर्ड्स हैं ऐसे जो बहुत ही एक्सपर्ट ग्लाइडर्स होते हैं, जैसे कि आपकी ईगल एंड वल्चर। अच्छा, आपको मालूम है कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो उड़ नहीं पाती हैं, फ्लाइटलेस बर्ड्स होती हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिच, पेंगुइन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके बॉडी का वेट काफ़ी ज़्यादा होता है जिससे कि वो फ्लाई नहीं कर पाते हैं। ऑलराइट, नो इट टू। नेचर साइंटिस्ट स्टडी प्लांट्स एंड एनिमल टू अंडरस्टैंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। जो नेचर साइंटिस्ट होते हैं वो प्लांट्स को, एनिमल्स को स्टडी करते हैं ताकि वो अपने एनवायरनमेंट को समझ सकें, उसे प्रोटेक्ट कर सकें। Beaks of birds. Birds eat different kinds of food. They eat grains, fruits, small insects and worms. Some of them eat the flesh of animals or hunt for fishes. The beaks and claws of birds are suited to their feeding habits. Sparrows, pigeons, peacocks and hen have a short, pointed beak to crush,
seeds. Parrots have a strong and curved beak which helps them to crack nuts and seeds. Parrots use their beak even to climb and hold on to the trees. आपकी जो बर्ड्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड खाती हैं, ऑल राइट. ग्रेन्स खाते हैं, कुछ इंसेक्ट को खाते हैं, फ्रूट्स को खाते हैं, वर्म्स को खाते हैं, कुछ एनिमल का फ्लैश भी खाते हैं, ओके, और कुछ फिश भी खाते हैं. तो इनके जो बर्ड्स के जो बीक्स एंड क्लॉज होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि उनकी फीडिंग हैबिट्स क्या है. ओके, हर किसी कुछ ऐसी बर्ड्स होते हैं जिनके बीक पॉइंटेड या शॉर्ट होती हैं, किसी की स्ट्रॉन्ग होती है, किसी की कर्व्ड होती है, ऑल राइट. सो हर बर्ड के आपके डिफरेंट टाइप ऑफ बीक्स एंड क्लॉज होते हैं, राइट. Eagles and vultures have a strong, sharp and hooked beak to tear flesh. Ducks have a broad, flat beak with holes on the sides. They dive deep and fill muddy water in their beaks. Water and mud flows out of these holes while insects and worms remain in the mouth. A kingfisher has a long scissor-like beak for catching fish. A woodpecker has a long, semi-curved and narrow beak to dig holes in the tree trunks and find worms from there. Eagles and vultures की बात करें तो उनकी बहुत ही strong, sharp, hooked beak होती है क्योंकि ये फ्लैश खाते हैं. All right. Ducks की broad, flat beak होती है और उनके sides में ना होल होते हैं. तो जब वो डाइव करते हैं डीप तो मडी वाटर उनके बीक्स में भर जाता है. तो वाटर और जो मड है उन होल्स में जो साइड में तो वो निकल जाते हैं, बट जो इंसेक्ट है, वर्म्स है, वो वहीं पे रह जाते हैं. किंगफिशर की बात करें तो इसकी एक लंबी सी सीजर जैसी बीक होती है जिसकी हेल्प से क्या करता है, फिश कैच करता है. वुडपिकर की लॉन्ग, सेमी कर्व्ड और नैरो बीक होती है क्योंकि टी ट्रंक में ना, ट्री के जो ट्रंक होते हैं उसमें होल करता है, ओके, और फिर वहां से वर्म्स निकालता है, ओके. Major types of birds. Birds of prey, raptors. These birds are skilled hunters with sharp talons and keen eyesight, including eagles, hawks and owls. So इन birds को skilled hunters कहा जाता है. इनके sharp talons होते हैं, eyesight इनकी बहुत sharp होती है. Waterfowl. Adapted for aquatic life, these birds like ducks and swans have webbed feet and waterproof feathers. अब webbed feet होंगे तभी तो ये water में आपके क्या कर पाएंगे, swim कर पाते हैं, और इसीलिए इनके जो feathers हैं waterproof भी होते हैं, ओके, क्योंकि ये पानी में रहते हैं ज़्यादातर टाइम. Perching birds or passerines. The largest group of birds including familiar songbirds like sparrows, robins and finches. Flightless birds, unable to fly. जैसे कि नाम में ही लिखा है flightless, जो उड़ नहीं सकते हैं. These birds are birds like penguins, ostriches and emus have evolved unique traits for land-based survival. Shorebirds, found near coast and wetlands. This group includes birds like gulls, sandpipers and terns. अब शोर बर्ड्स यानी जो कोस्ट के पास रहते हैं, वेटलैंड के पास रहते हैं, ओके, और यहाँ पे इनका मेन खाना जो होता है फिश होता है. मतलब जो भी इनके कोस्टल एरियाज में जो भी एनिमल्स छोटे मोटे होते हैं, ओके. स्पेशलिस्ट बर्ड्स, दीज बर्ड्स हैव हाईली स्पेशलाइज्ड ट्रेड्स. अब ये कौन से स्पेशलाइज्ड बर्ड्स हैं देखते हैं. हमिंग बर्ड्स एंड स्विफ्ट्स. Tiny birds known for their incredible agility and ability to hover. Woodpeckers known for their tree tapping skills. Parrots known for their vibrant colors and ability to mimic speech. आपको मालूम है पैरट ही इकलौती सी बर्ड है जो मिमिक कर पाती है ह्यूमन वॉइस को, है ना. एंड फ्लेमिंगोज फेमस फॉर देयर ब्राइट पिंक कलर एंड लॉन्ग लेग्स. ये काफ़ी फेमस है. इनकी एक्चुअली एक तो लंबी सी लेग्स होते हैं इनके और ब्राइट पिंक कलर के होते हैं जो बड़े ही अट्रैक्टिव लगते हैं. Insects. Insects are very small animals. They have 6 legs. They have a pair of antennae to sense their surroundings. Some insects have wings too to fly. Ant, butterfly, beetle, praying mantis, mosquito, housefly, grasshopper and cockroach are examples of some insects. इंसेक्ट आपके बहुत छोटे छोटे एनिमल होते हैं और उनके होते हैं 6 legs. इनमें एक पेयर ऑफ एंटेना होता है जिससे वो अपने सराउंडिंग को सेंस कर पाते हैं, और कुछ इंसेक्ट के विंग्स भी होते हैं जिससे वो उड़ पाते हैं. ऑलराइट.
Learn by doing, do it yourself, okay? Now sum it up. Nature trails and zoo visits help us observe plants, animals and their habitats closely. Wild animals live in forest and find their own food, while zoo animals are cared for by humans. Safety and respect are important while visiting forests or zoos. Elephants are known for their massive size, long trunks and large ears. Birds and insects have special adaptations like beaks, claws or wings that help them survive. Terrestrial animals live on land, aquatic animals in water and amphibians can live in both. So here comes the end of the chapter. I hope आपको ये chapter समझ आया होगा and keep doing practice of this chapter.